ओके जी, लास्ट थिंग जो हम इस गेम के साथ करने लगे हैं वो ये है कि हम कांस्टेंट स्पीड की बजाय अपनी गाड़ी में एक्सेलरेशन एंड ब्रेकिंग ऐड करने लगे हैं, क्योंकि बड़ा बोरिंग सा काम हो गया। आप गाड़ी चलाते हैं, बस वो अपनी स्पीड से चलती जा रही है। सो इसकी रफ्तार में थोड़ा सा इजाफा करेंगे। उसके लिए एक तो हम इसके स्क्रिप्ट में, माई कार स्क्रिप्ट में हम जाके एक प्रॉबेबली एक स्पीड का वेरिएबल डिक्लेयर कराएंगे जो कि स्पीड हमारी 0 से 1 तक जाएगी। सो फ्लोट स्पीड, और जब गेम चलेगी तो हम उसकी स्पीड कर देंगे 0। स्टार्ट में स्पीड इज 0, लेकिन अगर आप अप एरो दबाएंगे तो स्पीड में इजाफा होगा, अगर आप डाउन एरो दबाएंगे तो स्पीड में कमी होगी। ये बेसिक आइडिया है। सो इफ इनपुट डॉट गेट की कोड अप एरो, तो आप स्पीड इज इक्वल टू स्पीड प्लस 0.01 f। सो ये 100 डिफरेंट स्टेप्स ऑफ योर स्पीड हो जाएंगे। इसी तरह जब आप डाउन एरो दबाएंगे तो आप उसको माइनस कर देंगे स्पीड को, लेकिन ये काम आपने तब करना है अगर ये स्पीड ऑलरेडी लेस देन 1 है। सो इफ स्पीड इज लेस देन 1 तो आप ये करेंगे, एंड स्पीड इज ग्रेटर देन 0 तो आप ये करेंगे। यानी आपकी स्पीड कहीं नेगेटिव में ना चली जाए अगर आप डाउन प्रेस करें, और आपकी स्पीड 1 से ऊपर ना चली जाए जब आप प्रेस करें। गाड़ी हमारी मूव हो रही थी इस लाइन की वजह से, ट्रांसलेट 0.01, सो इसको हम 0.1 कर देते हैं। अभी हम चलाएंगे तो स्पीड विल नॉट डू एनीथिंग। अभी अगर मैं यूनिटी में जाके इस गेम को रन करता हूँ, the speed will not do anything, but you can see that the speed is pretty fast. So this is going to be my top speed. मैं क्या करूँगा कि अपनी स्पीड के साथ 0 इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। So what I will do is go back to my script और इस 0.1 मल्टीप्लाइड बाय स्पीड कर देंगे। 0.01 f मल्टीप्लाइड बाय स्पीड। अब क्या होगा कि जब गेम चलेगी तो स्पीड 0 है और आपकी गाड़ी खड़ी की खड़ी रह जाएगी। सो व्हेन आई रन दिस, द कार इज स्टैंडिंग एंड वेयर डिड यू कम फ्रॉम? अच्छा, ये वो 700 से आ गया होंगी। अब जब मैं अप एरो प्रेस करूंगा, द स्पीड गोज टू समथिंग पॉजिटिव, एंड व्हेन आई प्रेस डाउन इट गोज डाउन। गो सुपर फास्ट नाउ, और आई कैन स्लो डाउन। जब मैं स्लो डाउन करूंगा तो गाड़ियाँ मेरे से आगे निकलना शुरू हो जाएंगी, and this is pretty natural. So I'm now slower than the traffic, and then I'm now faster than the traffic, and then I'm slower again, and then I'm faster again. So you could use right, left, slow, fast, and well, the traffic is doing the same. It's not changing the speed, but you can probably change the speed of your car depending on, if you want कि आपकी की प्रेस के दौरान एक्सेलरेशन ऊपर जाती रहे तो उसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। you could change this code के if dot input dot get की है तो आप इंक्रीज करते रहें, और अगर आप डाउन करने की बजाय if you don't have that key press तो उसको माइनस करें। You can play around with this. You can also increase the top speed to, let's say, 0.3, and this is going to be very fast. So we can go super fast here and slow here. So it depends what you want to do with your speed. So with that we come to the conclusion of the section. Next video में हम देखेंगे कि आपकी हमें क्या असाइनमेंट देनी है सेक्शन की।